My voice was audible? Yes, audible. Okay, thanks. So, guys, before we going to start, I introduce myself and then we'll also want to know about your experience and in which domain you are working. So, my name is Arav and having experience around 18 years in telecom industries. I joined Ericsson and spent around 11 years and left Ericsson as a senior specialist. Then joined Reliance Jio, Mumbai NHQ as a quality assurance team. So this is all about me. All of you can start. Anyone can start. Your name, your experience, and your working domain, so that we can understand in better way. So anyone can start. Anyone can start. Otherwise, we'll take your name. So Arvind Pal. Hello, I'm audible to Yes. you. Yes. Yes. Hello, my name is Arvind Pal and having experience 3 years in telecom domain. Okay, so right now I'm working in Ericsson and Ericsson off previous roll on roll. off-roll. Previously I Okay. was working on Vodacom. Broadcom. Vodafone. Vodafone. Okay. So you are RF engineer or network engineer in Ericsson? Network engineer. CTN Oh, like okay. Next, Marco. Yeah, Marco. Now Akash. Guys, if you have any problem to introduce yourself, this is not right place. If you want, you can leave this meeting. Akash. Akash, Hello, are you sir. there? Hello, Yes, sir. Vinay. Yeah, Vinay. Yes, sir. My name is Binay Karmakar. I'm having experience of 1.5 years in telecom domain. Now I am working on uh, drive test coordinator uh, in Nokia off-roll, sir. Okay, so you are almost newborn baby and telecom. New, sir. Yes, sir. Okay, great. Now Akash. Deepak, those who not replying, not giving introduction, please remove from meetings. Yes, Saha Suman. Suman Saha. no one is telling. Then we can start now. No, no, will give some time. If is not able to discuss, so there this is not right place because I did candidate sharp minded. अपना नाम हम्म, लेने में क्या प्रॉब्लम है दोस्त? अपना एक्सपीरियंस कोई बताने में। अरे भाई लोगों अपना नाम Okay. ले दो भाई. हम्म, सर एक चीज पूछ रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे देने में क्या दिक्कत है? अरे हिंदी में बोल दो हाँ, भाइयों. या मनोज। Sir, myself Alok Kumar. I'm working on Geo domain. I have experience 5 years. Yes, sir. ओके, जियो डोमेन मतलब इन विच डोमेन यू आर वर्किंग? आरएफ इंजीनियर, डीटी इंजीनियर, इंटीग्रेशन, RF, ऑप्टिमाइजेशन,
The RF. RF, Yes, sir. RF engineer. Yes, sir. Okay. Manoj, सर यस सर बताइए. हाँ सर मैं तो लॉगिन किया था सर मैं एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कर रहा हूँ ना सर मैंने देखा तो अभी अच्छा मनोज, आप कोर साइड एक्सपीरियंस हाँ कैंडिडेट. Okay, okay. And now Ravi Kumar. Yeah, Ravi Kumar. Now ET sales SGA. Yes, ET. ET sales. Tell me about yourself. I take part later because I was walking. No, 2 minutes later. In which domain you are working? Industry domain. Telecom domain. Yeah. 10 years Yeah. experience. Which country you joined? Somaliland. Okay, great. Now Piyush Gupta. Hi, Piyush. I'm working. I have an experience of around 8.5 years. Currently working in Redis in telecom domain. Trade issues. You are all working in protocol domain. No, working in customer support. Customer support. Okay. Your customer is Jio only or any other customer you? Currently Geo only. Okay. Now Redis is also part of Jio, na? Ambani purchased Redis, Yes. I think so. Because I Yes, worked yes, in yes. Mumbai, so lots of candidates from Redis contacted through our in meeting Okay. for developer or tester team. Yeah. Now Bhupinder Kumar. Hi guys, I am Bhupendra Kumar and I have total 7 years of experience. 2 year in experience RF and 5 year experience in protocol domain. Okay. So in which company you are working, Bhupinder, as of now? As of now, Capgemini. Capgemini. Okay. And which technology you are working? 5G. 5G. Yeah. Okay. So you, if you are already working, why you join today? Yeah, that time at this time I am free, so Okay. I try to join approx 30 minutes or 1 hour. Okay. No Yeah. issue. Then Pramod. Yeah, Pramod. यस सर या भाई इंट्रोडक्शन दे दिया क्या आपने? यस सर मैं पिछली क्लास में भी था पिछली क्लास में थोड़ा डेमो से ही जिंदगी निकाल दोगे क्या? नो नो सर करना है ज्वाइन है? कर लो ज्वाइन फिर. हाँ हाँ ओके. नाउ विष्णु. Hi, sir. I'm Vishnu, working for Airtel India from more than 6 years, working on 4G billing section. So, but I'm more interested in working for protocol and all. So that's why I joined this class. In which circle you are working? In AP Telangana. AP Telangana. Okay. Okay, great. Now Akash is still available. You want to introduce yourself? Akash? Check it out. Okay, no problem.
भाई लोग अगर अपने आप को इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हो तो फिर ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए ना, फिर तो अपन स्कूल और कॉलेज में ही पढ़े हैं। अभी हम इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि लोगों के बीच में अपने आप नाम और ये सब बताने में मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। क्या कहते हो भाई लोग? हाँ सर, ये तो सही बात। है ना? क्योंकि यार मेरे को भी जानने का अधिकार है ना, मैं अपना 2 घंटा अपना दे रहा हूँ आप लोगों को, नहीं और सर, आप ये सब लोग तो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में कोई भी जाएगा इंटरव्यू में तो अपना तो नाम तो बताना ही होगा। नहीं तो फिर तो सर्टिफिकेट ले लो ना सीधा मूक बधिर का। अभी आप यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दोगे तो आगे इंटरव्यू कैसे आप क्लियर करोगे? हाँ करेक्ट है एकदम ना? एकदम सही बात। नहीं तो फिर तो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट ले लो कि भैया हम तो बोल ही नहीं सकते। है? हाँ राइट। चलो दोस्तों, आप लोगों ने काफी समय दे दिया टेलीकॉम को। अभी मेरे को अगला 5 मिनट लूंगा केवल। ओके, देन विल स्टार्ट अवर टेक्निकल सेशन। ओके ओके व्हाई नाइस। व्हाई मतलब आप लोग क्यों इस डोमेन में आना चाहते हो? आपको क्या नहीं मिला टेलीकॉम में रह के? थोड़ा बहुत रीजन बताओ। Why youth is going forward to transition in protocol testing for development? जिसको जितना आता है उतना बता सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी इंग्लिश नो बार फॉर राइट कैंडिडेट। अ, सर मेरी मेरी वजह से आरएफ के ऊपर पूरे से पूरा ऑटोमेशन हो गया अभी। इससे पहले ओके। बहुत जने लोग बैठ के काम करके बहुत सारे रिपोर्ट्स देने वाला था। अभी पूरा ऑटोमेशन हो गया। एक क्लिक में पूरे से पूरा जितना 10 लोग काम कर रहा था पूरे से पूरा आ गया। तो अभी उधर क्लाउड के ऊपर चले गया और ये ऑटोमेशन ज़्यादा हो गया। तो पीपल लोग एआई ऑटोमेशन एमएल मशीन लर्निंग एआई की तरफ से देख रहे। तो हम लोग ये सोच रहे कि प्रोटोकॉल तो रहता ही रहते। अगर ये सब कितना चेंज हुए तो भी प्रोटोकॉल तो इट शुड बी अवेलेबल। So that's why I'm thinking to join for getting knowledge on protocol. ओके, एनी अदर यू वांट टू ऐड समथिंग? एंड सेकंड थिंग ये है अपना ये अपना 5G पूरा एनआर पे बेस है तो वो क्लाउडी रहेगा, जैसे कि अपना लाइक डेवलप्स हुआ। ठीक है। और टेलीकॉम में एक एक कंसर्न रहता है कि जो अपना बिजनेस टीम को इनका अलग जनरेट रहता है, इनको अलग हैंडल करना होता है। तो इसमें कुछ मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है टाइमिंग क्या है। प्रोटोकॉल में और सॉफ्टवेयर में जाने का एक टाइमिंग रहता है, वो अपना एक 8 आवर्स या 9 आवर्स जो भी है, वॉट एवर। बट वो एक हम्म। काम करने का वो एक सिनेरियो उनका डिफरेंट रहता है। तो इसलिए वी आर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर फील्ड एंड आईटी डोमेन। ओके, एनी अदर गाइस? फटाफट एक एक 2 लाइन बोलो, इसके बाद अपन ये समाचार समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं। अपना जो मोटो है जिसके लिए वी आर हेयर। क्योंकि मैं उसका जावा का भी थोड़ा मैं खुद से पढ़ा हुआ था। हम्म। तो उसमें क्या है, जावा का थोड़ा एक्सपीरियंस अपना इसमें काउंटेबल नहीं होता है उसमें आईटी में अभी। तो टेलीकॉम का एक्सपीरियंस है वो काउंटेबल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो रहा होता है ज्वाइन करने में। इंटरव्यू दिया था काफी। तो इसलिए प्रोटोकॉल डेवलप से बेटर रहेगा इधर से मूव करने के क्या लिए है टेलीकॉम को। कि जिंदगी में देखो, मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस क्या कहता है, जिंदगी हम्म। में आप लर्निंग वही लोग कि पुराना जो अपना डस्टबिन वाला कचरा है ना, हाँ उसको एटलीस्ट हम 50% खपा सकें। हाँ राइट। ठीक है, अभी आज की डेट में कोई क्लाउड करता है, कोई डेवऑप्स करता है, तो उसको टफ होता है सिलेक्शन लेने में। हाँ वो ठीक है। एक्सपीरियंस काउंटेबल नहीं होता है ना, वो सबसे प्रॉब्लम हाँ, वही होता है। और एक टेलीकॉम फील्ड ऐसी है कि टेलीकॉम में चाहे बंदा हो थर्ड पार्टी में हो, सेकंड पार्टी हो, वेंडर में हो, ओईएम में हो, ओडीएम में हो या ऑपरेटर में हो, 50% चीजें तो वही करता है जो प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर करता है। हम्म। बस देखने का नजरिया होता है कि राइट अगर आई है मेरी और वो प्रोटोकॉल वाली आई है, तो वहाँ जो सैलरी बजट रहेगा 20 से 25 लाख के ऊपर रहेगा। हाँ और प्रोटोकॉल मेरा में अगर भी टेलीकॉम में भी वही रहता है, जैसे ड्राइव टेस्ट इंजीनियर रहता है। लाइक वो हाँ ड्राइव करता है अपना टेम्स पे ड्राइव करता है। और जो अपना हाँ प्रोटोकॉल टेस्टर होता है वो QXDM लाइक क्यू कैट, ये भी टूल्स होते हैं ना, वो फील्ड पे टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, सिनेरियो करेक्ट सेम ही है। रहता है।
लेकिन क्या होता है, जो इंडिया में ड्राइव टेस्ट इंजीनियर है ना, जिसको डीटी बोलते हैं लोग, हाँ वो डीटी तक ही काम करता है। वो अपना लॉग फाइल बनाएगा, भेज देगा, उसको मतलब नहीं है। वो तो अपना सिगरेट, चाय और शाम को एक बियर में खुश रहेगा। हाँ, उसको सीखने के हाँ लिए सर, मिलता है बट एकदम वो वो सीखता नहीं भले है। ही सही साला बात बोल रहे हैं। एक्सपीरियंस 1 साल का हो, चाहे 8 साल से लोग ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत 8 से साल ऐसे का हैं हो कि तो 1 दशक भी हो तो गई है लोगों को। हाँ मैं भी देखा हाँ हूँ काफी। और क्या, रीगर के पैसे भी बचा लेते हैं, गाड़ी घोड़ा का भी पैसा बचा लेता है। सोचता है कि मैं 50,000 का तो इंजीनियर हुई, लेकिन जब वो 4 महीने घर पे बैठता है ना बारिश में, फिर उसको याद आता है, यार कौन से गलत जगह फंसे हैं हम। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ दोस्त? नहीं हाँ सर, नहीं राइट सर, एकदम सब सही बोल रहे हैं, राइट, एकदम राइट। और साल हम 100 हमने रुपए तो का सर 1 साल आदमी, से यही सर। जो कस्टमर रहता है, आपको पता है कि कोई ऑपरेटर साइट में आरपू चलता है, रेवेन्यू, ठीक है। अभी 100 रुपए 120 रुपए का आदमी रिचार्ज कराता है, और 25,000 का इंजीनियर 10 माले की बिल्डिंग में चढ़ता है, देखता है कि आरएसआरपी सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। वो जाके रीगर को बोल दे, ऊपर चढ़ो यार, थोड़ा बहुत दबाओ, उठाओ उसको। बस हो गया, थोड़ा दबा देता है, चला आता है, हो गई सैलरी, जस्टिफाई हो गई। शाम को आके एक बियर पिया, 130 रुपए की। कलकत्ता में होगा तो, बॉम्बे में होगा तो थोड़ा महंगा, दिल्ली एनसीआर में होगा तो वो नोएडा चला जाएगा, सॉरी दिल्ली चला जाएगा लेने, ले चला है जाएगा। सेक्टर 15-16 उधर से ले आएगा, पी नॉर्थ लेगा। में होगा तो सर आसाम गुवाहाटी के तरफ होगा सर, 100 रुपए 80 रुपए में हो जाएगा। हाँ, वो बेहतरीन। अब अपने है, रूम पे उनको जाके सीख उसको रूम क्या पे सीखने को तो डाल रहता के है। रूम पे जाके अपना गद्दा डालेगा, सो जाएगा। कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है भाई लोग। क्या कहते हो इस बात पे? अगर कोई ऐसे ड्यूटी कर रहा है तो उसको बिलीव होता है कोई इंजीनियर वाला टास्क कर रहा है। नहीं सर, कोई नहीं, कोई काम नहीं है, वो कोई भी हम कर सकता है। वो टेक्निकल टेक्निकली कुछ सीखने को नहीं मिलता, सीखने को मिलता है आ, तो बंदा सीखता नहीं है। सीखता नहीं है, सीखने चीजें बहुत सारी रहती है हाथ में, इन हैंड उसमें लॉट्स ऑफ थिंग टू लर्न। बट टाइम अगर से मेरे अगर स्क्रिप्ट भी आज की रहता है डेट टाइम। में करेक्ट, सब कुछ रहता है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। या बट उसको अपनी मस्ती इतनी रहती है कि दिन भर वो 100 कॉल लगाएगा या 500 कॉल लगाएगा, लेकिन एक कॉल लगता कैसे ये भी नहीं पता होता। वो जो प्रोटोकॉल में काम करता है बंदा, एटलीस्ट उसको पता होता है यार, कहाँ रैच होगा, कहाँ आरआरसी होगा, कहाँ हाँ रिकॉन्फ़िगरेशन होगा, कहाँ हैंडओवर होगा, कैसे सीएसएफपी होती है, कैसे इवेंट ट्रिगर होता है। क्यों लेकिन डीटी ब्लॉक वाला होता है। सब फेमस में। अभी आ जाते ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर, लाल हरा पीला करते रहो जिंदगी में, 25 50 60 1 लाख 20 लाख 25 लाख के अगर 20 साल का एक्सपीरियंस है बंदे का, 15 17 20 सोल्यूशन आर्किटेक्ट 25, बस इससे ऊपर नहीं। कोई बता दो मेरे को आरएफ इंजन 50,000 50 लाख का पैकेज नहीं सर, है 30 का ही बता दो मेरे को। 30 वो लाख 8 उसको मिलता है जो सर्किल में डिप्टी सीटीओ रहता है ना। सर नहीं नहीं, 30 लाख का है बट उसका ये वो अपना स्पेशलिस्ट रहेगा या तो इंजीनियर हेड रहेगा, उसको मिलता है। हाँ हाँ, तो चीजें हैं, टेलीकॉम में लिमिटेशन है। ऑलरेडी इंडिया में तो ऑपरेटर जा चुके हैं, ओनली 3। एक आध तो लगता है लाल वाला चला जाएगा, 2-3 साल में बिक जाएगा या शट डाउन कर देगा। हाँ, I am talking about Vodafone because it's बड़ा not बना involving in था। deploying 5G as of now. हम्म तो जीवन खतरे में है, तो खतरा रीजन क्या है इसका? आप लोगों के पीछे रहने का रीजन क्या है? What is the reason behind you? You are stuck in telecom, not getting proper salary as based on your experience. What is the reason? I want to know just in next 2 minutes. कोई भी बता दो रीजन, सबका सेम ही रीजन है। Limited companies, limited number of people, but नहीं, पीपल तो इंडिया में बहुत हैं। not limited number of कंपनी people in the लिमिटेड है ना। sense company limited and working people are limited. मेरे को मेरा आंसर नहीं मिला, बाकी और कोई भी दे सकता है। मेरा एक ही आंसर है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज एक्सपीरियंस, नॉलेज, यस है ना। आज 4G आया 10-12 साल हो गए। हाँ सर। अभी 4G का कॉल फ्लो अगर आपसे पूछेंगे तो आप में शायद ही कोई हो जो कंप्लीट मेरे को कॉल फ्लो एंड टू एंड बता दे।
आई एम राइट और रॉन्ग? राइट सर। ये रीजन है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजों की, हमने उस गहराई से कभी देखा ही नहीं। और दूसरा क्या है, हम फ्रीक्वेंट 2-2 हजार में लोग जॉब चेंज कर रहे हैं और कुछ तो 50-50 हजार में चेंज कर रहे हैं। किसी को 30 मिल रहा है, आजा भाई मेरे पेरोल पे 35,000। किसी को 4 लाख मिल रहा है, मैं दूंगा 5 लाख, आ जाओ। 4 से 8 और 8 से 16 किसी ने सोचा है अब कि मेरा 8 लाख का पैकेज मैं 15 लाख पे कैसे जाऊंगा? हम तो देख लेंगे 20% दे रहा, 8 दूनी 16, 9,60,000 रुपए चले गए, ज्वाइन कर लिए। है रीजन की नहीं है ये? कैसा देखते हैं सर सब? पैसा देखो लेकिन डबल देखो यार, कम से कम 50% हाइक देखो। हम्म, आज आप जियो में जाओ 20% देंगे, 3 लाख का पैकेज 20%, 3,60,000 में जॉब चेंज कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जो टेलीकॉम में रिसोर्स काम करता है और जो सॉफ्टवेयर में जो रिसोर्स काम करता है, सॉफ्टवेयर के रिसोर्स वाले का जो वीकेंड का जो खर्चा है ना, वो टेलीकॉम इंजीनियर का सैलरी है इंडिया में। कितने लोग एग्री करते हो इस बात को? सही बात है यार। जितना उनका गाड़ी पेट्रोल पीता है और उनका पेट दारू पीता है ना, उतना आप लोगों का सैलरी है। कितने लोग बात से एग्री हैं? रेज हैंड करेंगे अपना। हाँ सर। है ना बात? रियलिटी यही है। हम लोगों को लगा बड़ा आसान कि टेलीकॉम में चलते हैं, 3 एंटीना देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, घुमाते रहेंगे साले को, राइट लेफ्ट करो, ऊपर नीचे करो, है ना? अपन ने सोचा ही नहीं कि यार चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सी प्लस प्लस पढ़ लेते हैं। बहुत डर लगता था चीजों से, और ऊपर से तो किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ले लिया तो माशाल्लाह, वो तो समझ लो कि बहुत बड़ी ब्रांच ले ली बंदे ने। जॉब नहीं, कहीं पे जॉब नहीं मिल जाएगा तो टेलीकॉम में जॉब मिल ही जाएगा कहीं ना अरे कहीं। आपके साथ में रहने वाले ही जिनके नंबर कम थे ना, थोड़ा उन्होंने एफर्ट डाला, 6 महीना 8 महीना कहीं जाके कोचिंग किया, वो आज आपसे 4 गुना पैकेज में होंगे। सच्चाई हाँ है कि सर, नहीं है एकदम बताओ? एकदम सही बात है सर। हमारा ही गधे से फ्रेंड। गधा लड़का, गधे से गधा लड़का साला 30,000 60,000 रुपए लगा के कहीं पूना चला गया, बैंगलोर चला गया, हाँ हैदराबाद चला गया और सेटल हो गया। फाइनली 1 साल के अंदर सेटल हो जाते हैं लोग। लेकिन हमको मिल गया मोबाइल, हमको मिल गई गाड़ी, घूम रहे हैं। टेलीकॉम का एक और सबसे बड़ा वो है कि ये लोग प्रेशर बंदा जैसे ज्वाइन करता है तो उसको डीटी में भी उसको 20,000 रुपये देता है। तो वो हाँ क्या वो खुश हो जाता है, स्टार्टिंग में सैलरी उसको अच्छा मिल रहा है, गाड़ी भी घूमने को मिल रहा है। और अदर जो कहीं भी सॉफ्टवेयर में ज्वाइन करेगा प्रेशर से तो उसको इतना सैलरी नहीं मिलता है। तो बंदा सोचता है उधर कम सैलरी है, उधर अच्छा सैलरी है टेलीकॉम में, तो टेलीकॉम वाला वो इतने पे रहता है, तब तक वो डबल हो प्रोटोकॉल जाता है। में आज भी मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए में बंदे हायर होते हैं। कुछ 1-2 कंपनियां हैं जो मार्केट को गंदा कर रही हैं, उनके अलावा मिनिमम 6 से 7 लाख रुपए, इवन जीटी आते हैं 8-8 लाख रुपए में, और टेलीकॉम में जीटी आते हैं 4 लाख रुपए में। हम्म। एरिक्सन में नहीं तो सर, इंजीनियर जो रहता है ऑन रोल वाला 5 लाख से 8 लाख, 8 घंटा रिपोर्ट बनाता है, घर चला जाता है। नहीं, ठीक है। इरिक्सन का तो सैलरी अच्छा है, ऑन रोल वाले अरे को 12 13 15 लाख मिलता है। 15 लाख उनको मिलता है जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। मैं इंजीनियर लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैंने 11 साल एरिक्सन ग्लोबल में मैंने काम किया है। हम्म। ठीक है, 11 साल के ट्रेनर में कम से कम 11,000 इंजीनियर मेरे सामने से चले गए हैं। मैं खुद भी इंजीनियर था, लेकिन सीनियर स्पेशलिस्ट मैंने छोड़ा था। हम्म। ठीक है, तो जीटी 3.5 लाख में आते हैं, और इंजीनियर कहीं से टेलीकॉम में काम वाम करके 5-5.5 लाख। पैकेज वहां भी है 50 लाख का, लेकिन हम्म। किनका है पैकेज? जो बड़े लीडर है। हाँ हाँ। ठीक है। सबको 50 लाख थोड़ी में मिलेगा। सो गाइस, नाउ राहुल, Yeah, hi Arav. yeah, over to you. Yeah, So, thank you. yeah, Rahul is your instructor, today instructor. Rahul having experience more than 14 years, and he belongs to IIT Madras. Now is working in protocol industries last 15 years. So over to you, Rahul. Most of the Okay. candidate belongs to telecom, wants to switch career into this domain. Over to you. We'll catch Yeah, you okay, later. thank you. Lots, guys, we have lots of things to show you.
Okay, so be available for next 1.5 hour. Okay, we'll catch you later at the end of the session. Over to you. Okay, thank you, Arav. Hi all, Rahul this side. So today I will take care of this demo. So let me share my screen first. Okay. So guys, today I will share with you some information like some basic things related to protocol. Okay, like what is protocol? As a protocolist tester, what job responsibilities we have, what will be our day-to-day life as a protocol testing engineer. Okay, and what all protocols we have in 5G or 4G. Okay, these basic things we will discuss. Okay, so if in between, if you have any doubt, any concern, any comment, so you can stop me at any point of time and we can discuss that doubt. Okay, so make sense? Or if you have any other concern or anything that we can address apart from that, किसी का कुछ और कंसर्न इसके अलावा कोई और कुछ टॉपिक हो दिमाग में कि उसका कुछ डाउट हो कि मैं प्रोटोकॉल से रिलेटेड ये कुछ पूछ सकता हूँ कि पूछना चाहता है, तो वो मतलब कभी भी आप पूछ सकते हैं ना. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So before even starting our main agenda, someone from you mentioned like one profile we have in this one. Okay, so let's first understand what is difference between like whatever you are doing, like infra profile, okay, like optimization, okay, or any integration or any other profile like DT we have one profile. Okay, RF planning, okay, or NOC one profile we have, or any other etc. Okay, and a protocol testing engineer. Okay, anyone like one basic difference, one liner. Leave that like time point of time, like working hours is fixed or this one knowledge or this one, leave that point, like one basic difference what we have between any other profile to testing profile. So the answer is guys R&D. Okay, R&D, research and development. Okay, means the opinion, like for an example, you are working as a DT. Okay, same one profile we have in protocol testing, FT, field testing. It is kind of same profile what we have in testing domain. Like RF we have, I think this profile, drive testing. Okay, so if I compare with the tool, so here we have, I think someone of you is mentioned the same thing. Okay, here we have QXDM. Okay, here we have QXDM. Then like a number of test cases if I talk about, so for an example, call. Okay, means VoLTE or voice call, anything, CSFB or handover, or for an example, throughput testing. Okay, etc. I'm referring this one for now. The same thing you will do here. And guys, what is the difference between these? If all are these two profile, we are working the same thing, then what is the difference between these two? So let me somewhere here F25K. Okay, and minimum he is getting 1 lakh. Okay, on an average. Okay, then guys, what do you think? Like, what is the difference? Why he is getting 25 for same work and why he is getting 1 lakh for the same type of work? Anyone? Sir, in protocol testing, it is the virtualization. No, leave that part. Leave that part. I will address your queries. Okay. Virtualization, automation, or this thing is different thing. Okay.
Okay. They can able to fix, like if any fault happens, this R&D team this can able to fix the bug and all. But here this cannot be fixed, and we are just processing the structure. Right, means This kind of kind of like thing. yeah, means somewhat right but not completely. Anyone else, means और किसी का कुछ डाउट? मिस देखिए मेरा कंसर्न क्या है कि आप में से कुछ समझे नहीं समझे, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि डीटी डिवाइस ड्राइव टेस्टिंग है, एफटी फील्ड टेस्टिंग है, दोनों प्रोफाइल सेम सी है, मतलब मोर और लेस सेम है, ठीक है। सेम टूल होता है, ड्राइव मतलब फील्ड में जाते हैं फिर लैब में टेस्ट करते हैं, वो एक सेपरेट सिनेरियो है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ आपके टेस्टिंग वो है कि आप क्या क्या सिनेरियोज रन कर रहे हैं, बट जो आपकी सैलरी है इसमें काफी ह्यूज डिफरेंस है ना। ड्राइव टेस्टिंग में आपको 25 के अराउंड मिल रहे हैं, है ना, और फील्ड टेस्टिंग में ऑन एंड एवरेज 1 लाख के अराउंड मिल रहे हैं आपको, है ना। कम ज्यादा हो सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दें naukri.com का कि ये एक 80,000 ही मिल रहे हैं, आप 1 लाख कैसे बोल रहे हो, है ना। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है ना, वो एक सेपरेट आप मान के चलिए, है ना, ठीक है, बट इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो अब दोनों सेम टाइप का वर्क कर रहे हैं, सेम चीज है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, बट फिर भी इतना डिफरेंस क्यों है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। Okay, so guys, first thing is leave that protocol part, leave that testing part. Okay, that's what we are doing in testing. Okay, what is our scenario? Leave that part. Okay, just one thing is, suppose here you are observing in this one call fail. So what you will do as a drive test engineer, you will collect the log and send this to your coordinator or whatever lead or whatever Yes, yes. you have, right? And even that lead don't have that enough knowledge or enough kind of exposure to analyze the like reason behind this call failure, right? Like if you have team of 8 member or 10 member, only one or hardly 2 member having the knowledge of this one to analyze this log, what is causing this fail, what is the reason behind this call failure? Agree? Have you ever seen that, like any failure log, guys? Yes. Okay, so in this failure I'm not talking about the coverage kind of thing, like if network coverage is poor, then that is obvious reason. Like if network coverage is poor, then like you can observe the call drop, that is different case. Okay, but here if I am adding research, just one these two things, research and development, okay, me just research, just your knowledge I'm adding here. Okay, so if you are getting any failure case, you have to look into the log, what is the reason behind this call failure. Okay, so for this, for analyzing this type of things, this type of failure, first you have to get familiar with what is expected behavior. अब मतलब failure तो तब देख पाओगे ना जब आपको पता हो कि सही में इसका फ्लो क्या होना चाहिए था, कि रियल सिनेरियो क्या है इसका, कि एक्सपेक्टेड सिनेरियो क्या है आपका, मतलब क्या सिग्नलिंग कैसी होनी चाहिए थी, क्या मैसेज जाना चाहिए था, क्या मैसेज आना चाहिए था, काइंड ऑफ थिंग, राइट। एक थिंग ये है कि जस्ट एक इसके कारण कि इसको इनफ नॉलेज है किसी भी चीज को किसी भी पैरामीटर के बारे में कि क्या है, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, है ना, इसलिए ये 1 लाख डिजर्व करता है। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको 25 मिल रहे हैं, जो भी आप कम कर मतलब जो भी आप ये कर रहे हो गाइस, दिस इज इजीली रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल मीन्स आप कर रहे हो, आपकी जगह कोई भी ले सकता है इजीली, कि मीन्स आप एक दिन में वो नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हो कि ये मेरा टूल है और ऐसे ऐसे ये विंडो खोलनी है और बस ये ऐसे ऐसे आप कॉल कर लेना, थ्रूपुट कर लेना, ये लॉग यहाँ से कलेक्ट कर लेना, दैट्स इट। Nothing specific to any analysis or nothing specific to any flow or any research element or anything, nothing like that, right? So here job is kind of very easily replaceable. So any company today need like 20 or 50 people because they need like manpower.
tomorrow, day after tomorrow, they definitely will decrease the manpower, because like it's all about the deployment, like in this profile, right? But here I like cannot say like this is not replaceable, but if someone wants to replace you, definitely it will take time to find out the person who is having rich knowledge, at least let's just like similar to you. So if we compare stability from these two profile with higher package, this person is more stable as compared to this one, just because of this knowledge. That's it. So guys, here knowledge is the key, not the automation or virtualization or anything. Clear this part guys? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी का और कोई व्यू है इसमें? No, sir, clear. Okay. So now next thing is what is protocol? Anyone? प्रोटोकॉल क्या है? कोई आइडिया? मतलब जब आप ये अब आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग के बारे में सुन रहे हो कि भाई 4G टेस्टिंग है कि 5G टेस्टिंग है, सो प्रोटोकॉल टेस्टिंग ऐसा कुछ आप मार्केट में सुन रहे हो, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना व्हाट इज प्रोटोकॉल, कि है क्या, मतलब प्रोटोकॉल क्या है। बाकी सब चीजें तो बाद में पढ़ेंगे। एनीवन, एनी आइडिया व्हाट इज प्रोटोकॉल? A set of rules. That is fine. Means from book language, that is perfectly correct. Means protocol is set of rule. But like sometime when we hear any term like protocol, so picture क्या बनती है आपके mind में कि what exactly that protocol? Protocol is a standard set of rules that right. allow electronic device to communicate with each other. Then these rules include what type data may be transmitted and what command are used to send and receive. I think that is the protocols, na? Right. Okay. So the protocol is definitely set of rule. Okay. And why we need this protocol? Just to establish a communication between two and more node. Okay. So just leave our 5G protocol. Okay. Just we have two node here. Okay. For an example, here we have two node. Okay. And we want to establish a communication between these two node. Okay. Means bidirectional. This one can send and receive anything, and this one can send and receive anything. We have two node. Okay. A and B. Okay. So what we need? A protocol. Okay. Here a protocol. Okay. So suppose for an example protocol, you can compare with the language. Okay. Means today we are communicating in Hindi or English. Why? Because all of you are having knowledge of that Hindi and English. Okay. Suppose suddenly I just start communicating in some another language. For an example, any French, okay, Spanish, any other language, and you are not able to decode that thing, not able to understand that language. So can we communicate in that way? No, right? So suppose in that same way, suppose No. here we have two things, like suppose French, okay, and Hindi for an example. Okay, so this node A can understand and talk in Hindi and this one in French. So can they communicate with each other? No, right? No.
right? So when we say protocol or set of rule, so each and every node and each and every person in the system have to follow the same set of rule. Okay, so to establish a communication between these two nodes, we have to set like this: A should know Hindi and B should know Hindi, right? Then only we can establish a communication in that one. Okay, so when I say H, so this is kind of, you can compare with technology 5G or 4G. When I say protocol, so grammar, word, right? These are my protocol, these are my rules. अब मुझे हिंदी में बात करनी है तो मुझे उसकी ग्रामर आनी चाहिए, व्याकरण आनी चाहिए, राइट? मुझे वर्ड पता होना चाहिए, मुझे वर्ड फ्रेमिंग आनी चाहिए, है ना? तो वो क्या है, उसके रूल्स हैं। ओके, तो अगर हिंदी मेरा टेक्नोलॉजी है तो उसके रूल्स कौन से हुए? ग्रामर। मतलब किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर एंड वर्ड एंड वोकेबुलरी, दोज आर माय रूल्स। ओके, so in the same way we have some protocols, some rule in these 4G and 5G. Those are my 5G protocol or 4G protocol. I will tell you, means, and next couple of minutes I will tell you like how many protocols we have. So guys, this is clear, means this is the basic picture, like what is protocol apart from the language, apart from the definition. Any doubt guys in this one? Anyone, any doubt? सर और एक बार बताइए ना, समझ में नहीं आया सर। ठीक है, देखो प्रोटोकॉल जब हम बोलते हैं ना क्या है, तो एक रफ लैंग्वेज एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? ये बाद में देखेंगे 4G क्या है 5G क्या है। कि आपके पास में दो बंदे हैं, ठीक है? ये A है, ये B है, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मेरे को एस्टेब्लिश करना है कि ये दोनों बात कैसे करें, ठीक है? तो इन दोनों को बात करने के लिए मुझे एक रूल डिसाइड करने पड़ेंगे कि जो भी ये बंदा बोलेगा और ये बंदा सुनेगा, तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग इन दोनों को पता हो, तभी तो दोनों बात कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ये हिंदी है, मतलब मेरा प्रोटोकॉल मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है? कि हिंदी में बोल रहा हूँ, ये B बंदा हिंदी बोल रहा है और ये A बंदा हिंदी सुन रहा है, तो जो भी ये बोल रहा है उसका अगर मीनिंग इसको पता होगा, देन ओनली A कैन डिकोड, राइट? अगर मीनिंग पता होगा पहले से, अगर इसको पता ही नहीं है तो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, जो प्रोटोकॉल है वो हमने कुछ प्री डिफाइन रूल बना रखे हैं, कुछ अपने अब जैसे हिंदी को अगर मैं प्रोटोकॉल बोल रहा हूँ तो उसके अंदर के रूल कौन से हैं? ग्रामर है ना? जैसे व्याकरण जिसको हम बोलते हैं, और कुछ वर्ड्स हैं जो मेरे, जो शब्द हैं हमारे, है ना? और कैसे मैं वो सेंटेंस बना रहा हूँ, वो मेरे रूल हैं कि मेरे ऐसे ही आएगा। सबसे पहले वो सब्जेक्ट ही हम लिखूंगा मैं, जब भी कोई सेंटेंस शुरू करूंगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, राइट? ये रूल है, ये फिक्स है। फिर वर्ब आएगी, वर्ब की जो है हेल्पिंग वर्ब, वो फिक्स है मेरे पास में, राइट? तो दोज आर माय रूल्स, ठीक है? सेम इस एग्जांपल से ऐसे ही मेरे पास में 5G और 4G में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ओके? इन द सेम वे वी हैव सर्टेन प्रोटोकॉल्स इन 5G एंड 4G, ओके? दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दिस वन, ओके? सो नाउ एनीवन, एनी डाउट इन दिस वन? व्हाट इज प्रोटोकॉल? Okay. So next thing is, who define this protocol? Who is responsible for this one, setting this rule or defining this rule? Anyone? Is it 3GPP? Yes. IEEE and ITPU, I think. ITU, yeah. ITU is the organization. IEEE and 3GPP and ITPU. Yeah, 3GPP basically, okay? I mean, 3GPP specs we have, ITU is responsible, okay? So then what is the 3GPP, guys? Roughly means, what is the 3GPP? It is any company or any organization?
any government body? It is in community. Okay, Community. 3GPP होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ठीक है, ये अपना right. एक 3GPP एक ऑर्गेनाइजेशन होता है डेवलप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लिए। These technical specifications and are then transposed into standard by the 7 regional करके मतलब SSOS रहता है 7 regional standard setting organization that form of 3GPP standards. Okay. So guys, 3GPP again, partnership project. Okay. So roughly, if we just try to understand, it is a kind of group of people. Okay, group of people. So people from leading institute. Okay. Means leading R&D institute means just I take example of India, IITs. Okay, NITs. Okay, IISc. ठीक है, सो कुछ रिसर्चर इनमें से, देन गवर्नमेंट बॉडी, means again Department of Telecommunication in just for example for India. Okay, then R&D companies, okay, means like Jio, Nokia, okay, Samsung, Qualcomm. Okay, means etc, many more companies we have. Okay, these are means we have people from these organizations. Okay, so some people from these organizations come together and they do a lot of research, then they finalize some things like some rules, some parameters, or something that they just finalize after a lot of research, after a lot of discussion. Okay, so in that way, after this discussion, after this thing, we will publish those research in 3GPP, and after 3GPP everyone has to follow this spec. Okay, everyone means handset making companies, everyone at vendors means infra vendors, for an example Samsung, Ericsson, Nokia, everyone means okay, handset making companies means chipset side Qualcomm, MediaTek, then these Oppo, Vivo, each and every company. Okay, then operators. Okay, so each and every have to follow this spec. Okay, after that only means as all of them are following the same spec, same thing, same rules, so in that way only we can establish a communication between them, right? Okay, so guys, next thing is 3GPP releases. Any idea like 4G release? In which 3GPP release we got? R14, R16. R14. 14 Okay. to 16. Okay, 15 and 16. Yeah, no, I'm thinking because release 5, release 6 is for 3G, and when this 4G, when HSDP, HSUPA come up, that is into R12 and R13. But I know like little bit knowledge, but not exact figure. But I'm assuming that 4G comes into 15 to 16, 20. Okay, 4G. Okay. Anyone else? Guys, any idea? Any roughly guess? कि कौन से 3GPP रिलीज में हमें ये 4G मिला था और 5G मिला था इसके बाद में? आप जी तो LTE एडवांस रिलीज 10 में मिला हुआ था। ठीक है, Release 8.
रिलीज 10 में एलटी एडवांस में लगा था, जैसे अपना कैरियर एग्रीगेशन हुआ, माइमो एनहांसमेंट अप टू 8 into 8 एंड एसवन हुआ, सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन नेटवर्क। ओके रिलीज 13 में तो सर आईओटी और M2 मशीन माइमो माइमो इनटू मशीन टू मशीन करके ऐसा कुछ, और नैरो आईओटी था। ओके और कोई? Okay, so guys, LT in release 8, advance एलटी रिलीज 8 में ओएफडीएमओ माइमो बैंड, ऐसे LT release 8 ईपी3 में आ हुआ, जाता है। एचसीडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू कॉन्सेप्ट। नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है वो, है ना, PGW नोट्स है अपना, ठीक है। हम्म। LT एडवांस आया हमारे पास में रिलीज 10 में, ठीक है। देन 5G NR आया रिलीज 15 में, ओके। So this is the guys release related to 3GPP, okay, related to our technology, okay। मीन्स ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये तो एकदम वेरी बेसिक है, आपको स्पेक नंबर भी पता होना चाहिए कि जैसे जो प्रोटोकॉल्स हमारे पास में है उनके स्पेक नंबर क्या है, ठीक है। चलो वो कोई बात नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो क्लियर प्रोटोकॉल एनीवन? प्रोटोकॉल मींस 3GPP स्पेसिफिकेशंस कुछ ऐसे रहते हैं। हाँ स्पेसिफिकेशन रहता है, जैसे 331 है, जैसे 36 हाँ सीरीज है, जैसे अपना आरआरसी में कौन सा 3GPP स्पेसिफिकेशन 36.331 करके, तो लिटिल बिट करेक्ट। पता तो है। 3GPP ये 36 किस चीज के लिए है? 36.331 ए या आरआरसी के लिए रहता है। ठीक है, ठीक है। तो 36 से आप क्या समझते हो? 36 बोले तो थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, प्रोटोकॉल नहीं प्रोजेक्ट। नहीं, अरे नहीं नहीं, ठीक है। वो एक आइडिया 36 जो नहीं है। नंबर है, ठीक है ठीक है। सो 36 guys LT, okay, in same way 38 we have NR, okay, 331 we have RRC, okay। So in the same way 38.331 is NR RRC, okay, okay। Means in that same One way doubt. we have, How about yeah, SNR? How about SNR? SNR. Yes. Yeah, what do you want? Signal to noise ratio? Yes. Yes. No, 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 no. This is synchronization, non-synchronization, right? So in 5G, like people will be developing in 4G with 5G. That is SNR. NSA. NSA. Okay. Sorry. Yeah. NSA. नॉन एक्सिस्टेड नहीं, ये नहीं, No, no, ये no, no. दूसरा है। NSA, non-standalone. Yes. हाँ, Non-standalone. Non-standalone. Yeah, that is And again like that 5G, is also anything. Yeah, so see here in NSA, basically we have 4G plus 5G. Means I will yes. explain if you want. I will explain. This is kind of today out of scope for today's session. Okay, but that's in short. Just let me explain. This is kind of NSA. So NSA. Let me show you if I have one slide. Okay, I think today in one of the batch I have covered something like that only. Yes, this one. Okay. So this is guys NSA. This one NSA and SA. 5G we have two flavor. Okay. A standalone means here we are not using any other technology. Only we are working on one thing, one technology. Okay. Another hand we have NSA. Okay. So this concept like earlier also we have. So for an example, this one standalone. This is non-standalone. These are deployment options we have. Okay. So whatever we have is EPC means 4G core and our eNode B. This is also part of SA. Means SA is nothing specific to any technology. Okay, this is kind of deployment options we have. Okay, standalone. So this is option 1. Whatever we are using in LT. So up to LT we have only this option. That's why we were not explicitly covering this deployment option topic or part. Okay, but now in 5G we have different thing, different deployment option. Okay,
deployment option. So you are talking about NSA, non-standalone LT plus 5G. Okay, so here what we are doing is this one 5G core plus LT core plus LT node B. This one we have, ये हमारे पास में है राइट, अभी भी जो हम यूज कर रहे हैं LT में, LT का कोर है, LT का इनोड भी है. हमने एडिशनल क्या ऐड कर दिया, 5G का इनोड भी इसी सेम नेटवर्क में. तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास में मिल रहा है उसमें 5G की कुछ कैपेबिलिटी ऐड कर दी हमने, तो परफॉर्मेंस एनहेंस कर दिया. दिस इज NSA गाइस. ओके, यहाँ आप देखोगे तो ऑप्शन अगर मैं 4 वो करता हूँ, एडॉप्ट करता हूँ, तो 4G को 5G कोर है, 5G नोड है, बट मैंने LT का नोड ऐड कर दिया. ठीक है, to add some more capability, some more capacity. Yes, we are not using this option. We are using only option 3 or option 2 in real-time deployment. Okay, for standalone 5G, we are using 5G core with 5G G node B. Okay, this is what we are adopting, option 2 and option 3 for NSA. Okay, clear. And Okay, thanks for clear? this. My doubt is this concept will come into release 10 or No, it is 50 only. 50 only. Okay, 50. So whatever 5G enhancement, additional feature, end-to-end, whatever we are like receive, that is release 15 only. Okay. Okay. Yeah, thank you. Anything related to 5G, we received in 15. Okay, thank you. Okay. Okay. Then guys, 5G protocols. Okay. What all protocols we have in 5G? Okay. So again, I am dividing into this is my UE. UE means my user equipment. Okay. This is my G node B. Okay. LT you can compare with E node B. Okay. This is my AMF. AMF is like similar to what we have in LT, MME. Okay. AMF means? This is kind of mobility function, means your access mobility function. Your compare with in LT we have MME, right? In LT we have MME. Okay. In the same way in 5G we have AMF. Okay. Sir, MME means sir. It will work. I think what authentication कराना होता है क्या? नहीं, काफी काम है इसके, सिर्फ ऑथेंटिकेशन नहीं है, काफी काम है इसके, है ना. EMF के जैसे आपका कंट्रोलिंग, मतलब सब कुछ जो कंट्रोल करेगा वो MME करता है ना LT में. इन द सेम वे 5G में AMF है. जैसे अब ये है आपका उसको क्या बोलते हो आप LT में इनोड B. Evolve node. In the same way here we have G node B. Okay. मिस काफी कुछ चेंज हुआ है 5G में. Okay. So guys, in short, 3 layers we have, 3 protocol layers we have. Okay. First one is topmost layer is my L3. Then we have L2. Then we have L1. Okay. So in L3 we have 2 protocols. Topmost is NAS. Then second one is RRC. Okay. And MAC. Okay. So this we also have in LT, but now in 5G we have one more additional protocol, which is SDEP. Okay. This is kind of new in 5G. Okay, SDEP. Okay, so this L1, then we have 5 layer protocol. Okay, physical layer, 5 layer. Okay, so these 3 layers we have. Now let me explain you this one in stack. Okay, so topmost is my
Here we have topmost is RRC, then NAS, then here we have SDEP, then PDCP, then RLC, then MAC, okay, then have PHY. Okay, in the same way, so this is guys L3, this is L2, this is L1. Okay, in the same way, here we have L3, L2, L1, but we have one difference here. What difference? Here we have only RRC. Okay, NAS is kind of core layer protocol, then SDEP, then PDCP, okay, then RLC, then MAC. Okay, and here we have PHY. And then where we have this NAS layer, this one NAS layer in MMA. Okay, this is kind of stack we have. Okay, this one, this is stack we have L2, L3 or L1 level at UE, G Node B, and this one AMF side. Okay, so the next thing is how the communication happen between these protocols. Miss, specifically, let's discuss this one. Okay, this is kind of tricky one, so that's why I prefer to discuss this part. Okay, anyone? So just leave that part. So can RRC communicate with NAS? Can communicate with RRC, guys? Any idea? No, sir. Miss, this is answer or you don't have idea? No, sir. I don't have any idea about this. Okay. Okay. Anyone? I hope it will communicate because without eNode B, the UE cannot be transfer anything. Okay. 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 Anyone else? Okay. So guys, here, first part I have explained this NAS or any other protocols or any other thing cannot communicate with any other protocol. Means only RRC can communicate with RRC. Okay, NAS only can communicate with NAS layer. Here, NAS only can communicate with NAS layer. Okay, means the same way SDEP with SDEP, PDCP with PDCP, RLC, MAC, and they can communicate with their respective other ends layer. Okay, then the question is how this communication hello, happens. sir. Next, yeah, go ahead. हाँ सर, मेरा इंटरनेट फ्लक्चुएशन हो गया था, फिर से एक बार बोलिए ना सर, वो NAS का जो अच्छा, बोला है NAS का पहले। मेरा डाउट है, NAS का डाउट है कि NAS क्या RRC से कम्युनिकेट कर सकता है? Can this NAS communicate with RRC? No, sir. No. Okay. So NAS only can communicate with NAS layer, right? Yes. So do we have any, means this one UE can directly communicate with MME or AMF? है ऐसा कुछ सिनेरियो हमारे पास में? No, sir. UE तो सर डायरेक्ट कनेक्ट सिर्फ तो GNB से कर सकता है सर। So फिर ये NAS मैसेज कैसे भेजेगा AMF को? सोचा है? GNB से सर, थ्रू GNB। तो GNB तो NAS RRC से कर ही नहीं सकता ना कनेक्ट, मतलब क्या फिर भी जैसे कैसे भेज रहा होगा?
Okay, so just I don't want to demoralize you. You are aware with these node, right? UE, eNode B, let's check with MME, right? You are aware with, we have these node in LT as well, right? You all are working on LT at least. Okay, but now you see, like, you don't even aware with the communication happens between these nodes, right? I Yes, think you sir. should aware, right? मतलब पता होना चाहिए ना आपको कि जैसे आप किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, चाहे कितने भी टाइम से कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, बहुत मतलब एकदम स्क्रैच है, मतलब बाकी सब चीजें ही इसके बाद में आएंगी। ये एबीसी है, मतलब काइंड ऑफ। ए पे ये गिन लो कि नोड कितने हैं, और आगे आप ये कर लो कि भाई प्रोटोकॉल कितने हैं, फिर कम्युनिकेशन कैसा होता है। बहुत ही बेसिक चीज है ये, राइट? मतलब आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। अगर आपको इतना पता होगा तो बंदा पैसे भी दे देगा आपको। जो इंटरव्यूअर होगा, जो कंपनी होगी, वो आपको पैसे भी दे देगी, है ना? हाँ सर। आज जहाँ आप वर्क कर रहे थे, जो भी मतलब है, इसीलिए आपको मतलब इतना वो चक्कर में नहीं पड़ते कि भाई क्या है क्या नहीं है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है। 2 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको सब पता चल जाएगा, है ना? आप हाँ मतलब सर। काम कर लोगे, आप एग्जीक्यूशन कर लोगे, बस दैट्स इट। आप बस काम कर लो, खत्म बात। तो वहां शायद आपकी ग्रोथ स्टक है यार, है ना? सो लीव दैट पॉइंट नाउ, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, सो फर्स्ट चीज क्या बताई? ओनली सेम लेयर कैन कम्युनिकेट विद सेम लेयर। ओके, मीन्स ये है। अब नाउ वी हैव वन पैकेट n, okay, which is our NAS packet, okay, and we want to send this packet to NAS. Then what we will do? We will, but this RRC can communicate with RRC, right? This RRC can communicate with RRC. So what we will do? We will piggyback those message, means एक kind of, आप ऐसे imagine करो कि आप एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर आप एक छोटा बॉक्स डाल के भेज दे रहे हो, है ना? पिगीबैक कर दिया हमने ये मैसेज, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे जाता है कि ये मेरा पूरा मैसेज है, ठीक है? ये मैसेज आर है, मिस आरआरसी का पैकेट है। इसके अंदर मैंने क्या किया? नैस का छोटा सा बॉक्स डाल दिया, ठीक है? अब ये नहीं है कि ये इसको डिकोड कर सकता है, ठीक है? बट ये काइंड ऑफ इस पैकेट को लेके जा रहा है, बस इसको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है ना? बट ये ट्रांसपोर्ट कर देगा इस पैकेट को, ठीक है? सेम वे अपर लेयर टू लोअर लेयर जाएगा, देन यहाँ पे आपके एंटीना कैरियर से के ये जाएगा। जैसा। हाँ, हमें अपर लेयर टू लोअर लेयर, यहाँ से ये एंटीनास के थ्रू ओवर द एयर जाएगा, ओटा जिसको हम बोलते हैं। देन ये रिसीव करेगा, ठीक है? देन यहाँ से लेयर से स्टार्ट होके ये यहाँ पहुंचेगा, ठीक है? अब when this RRC will receive this packet and what it will do? RRC will do, RRC will open this RRC packet and it will find out we have something belongs to NAS, ठीक है? उसको पता चलेगा कि कुछ नैस पैकेट है इसके अंदर। उसको ये नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन क्या है इसके अंदर, कि इन्फॉर्मेशन एन करके कोई इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। इसको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि एन पैकेट है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? इस एन पैकेट को आरआरसी को ट्रांसफर कर, सॉरी, एएमएफ को ट्रांसफर कर देगा। एंड एएमएफ कैन डिकोड दिस पैकेट लाइक वी हैव सम इन्फॉर्मेशन एन इन दिस पर्टिकुलर मैसेज, इन दिस पर्टिकुलर पैकेट। ओके, क्लियर? ओके सर। ओके, मिस ये तो एक बेसिक है, बाकी मैसेज वगैरह कैसे होते हैं, एक सेकेंड। अगर टूल मेरे पास में है, क्योंकि अगर ओपन होगा सुबह का तो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, ये आरआरसी मैसेज, ये ईएलटी है। शो मैं बता दूंगा, ये तो मैंने बीच में ऐसे ही खोल दिया आपके लिए, ये बात चल रही थी तो, है ना? ये पैकेट ये कौन सा है मेरा? ये देखो, नाम क्या है इस मैसेज का? आरआरसी मैसेज है।
ERRC means LTRRC, then RRC connection setup complete. मैसेज है Yes. डिटेल में बाद में कभी डिस्कस करेंगे ना क्लास में, बट यहाँ अपना देखना ये वाला पैकेट, ये पैकेट जो मैंने हाईलाइट किया है, अच्छा, ठीक है। RRC dedicated के अंदर जा रहा है डेडिकेटेड इन्फो NAS, ये वो NAS पैकेट NAS. है, ये वो NAS इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरा किस में जा रहा है, RRC पैकेट में जा रहा है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम टूल के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। मतलब हम जब बाद में पढ़ेंगे कभी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट जस्ट अभी के लिए मैंने दिखा दिया, ठीक है। सो गाइस दीज आर द प्रोटोकॉल्स वी हैव इन LT और सॉरी इन 5G, ओके। इन LT अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ये हमारे पास में नहीं है LT में, बाकी सब प्रोटोकॉल है। फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, बाकी सेम प्रोटोकॉल्स वी हैव इन 5G, okay, means different functionality, different nodes, different operations we have in 5G, okay, but more or less we have the same thing. So is that clear? Any doubt guys in this one? No, Anyone? sir. Clear. Clear? Okay, so बस मैं एक लास्ट डिस्कस करता हूँ कि वर्क कैसा रहता है ना, काम क्या रहेगा आपका, ठीक है, कि फ्लो कैसे वर्क करता है। ओके, सो सेम हमें देखते हैं कि जियो है, ठीक है, जियो का एग्जांपल लेते हैं, आरजियो है, सेम वे, ठीक है। आरजियो ने अपना प्रोजेक्ट किसको दिया, सैमसंग को, राइट। सैमसंग इज काइंड ऑफ देयर infra partner, right? So what this Samsung will do, this is kind of initial thing, when they will get requirement like Reliance Jio क्या चाहिए, कीनोट भी चाहिए जो बैंड 78 सपोर्ट करता हो, 5G का 64x64 MIMO, 64x64 MIMO सपोर्ट करता हो, है ना। देन बीम फॉर्मिंग, ठीक है, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और मल्टीपल फीचर्स में लिख देता हूँ ना, कुछ कुछ फीचर सपोर्ट करता हो, तो व्हाट दे विल डू, रिलायंस जियो विल डिस्कस देयर रिक्वायरमेंट विद सैमसंग, ओके। नाउ सैमसंग हैव देयर प्रोजेक्ट, okay, so what Samsung will do, Samsung will first finalize the requirement, means what they can develop, what they can't, okay, and according to their requirement they will prepare some HLD, Hardware. high level document. Oh. Okay, high level document, this is kind of internal document they will prepare, okay. Then to prepare any equipment, what we need, or to prepare any device, what we need, one hardware plus one software, okay. This is our basic requirement, okay. So guys, we are part of which team, we are part of software team, okay, we are part of software team, okay. So now in this software we have two part. Which two part? First one is development, second one is testing, okay. Again we are part of which team, testing team, okay, we are part of testing team. So developer team will write a code, okay, in C or C++, accordingly they will write a code for these features, okay, clear. So suppose they just write down the code for this one, band 78 support, okay. So they will release this code to us, okay, at testing team. So just for an example, this is software version 1. So what we will do, we will try to test this requirement of this 78, okay, means what is the frequency range, I think 3.4 to 3.6 gigahertz or something, means related to this one, I don't remember for now specifically, but this one frequency range we have for this one. So what we will do, we will try to camp this frequency, we will try to tune this frequency, okay, means attach this frequency to NR attach, or are we able to hand over this frequency, I mean, this type of test case we prepare, okay, means attach, hand over, okay, cell reselection, okay, this type of test case we prepare based on the
this requirement. Okay. So suppose now we are facing some issue with handover. So what we will do, we will raise this issue to development team, and we will just provide our analysis. Like on this step, our handover is failing for this band support. Okay. So what we will raise a bug. Bug is nothing but a issue, a defect in the software. Okay. This is my bug 1. So what development team will do? Development team will provide the fix. Okay. Suppose in software version 2. Okay. Again, we will test the same thing. Same thing we will try to test. And again, we will provide our bug feedback or bug to the okay development team. And now suppose in that same way, now we are getting software version 10. Okay. With some more fix. And now this is working fine. Everything is passing, or the behavior is everything expected. fast. Okay. Yes. Everything is passing. So what we will do, we will release this one to Reliance Jio. And now again, Reliance Jio will test this software version in their lab environment, in their field environment, is whatever setup they have. Okay. So again, if they find out an issue, they will raise that issue to the Samsung team. Okay. Then we will check again. Yes, yes, yes. Okay. So Yes, this is yes, the flow, yes, guys. I understand. Okay. Okay. And this is the flow. Okay. So the more or less things are same, but what we need, end-to-end knowledge of that flow, end-to-end knowledge of any. Suppose for an example, this one. Okay, we have multiple eyes, this one, this one, this one. Okay. Yes. And each and every eye, this one DRX parameter, for an example, this contains reception. So we have significance of this parameter. Okay. So we should know, like, what is the effect of this parameter and what is the possible value of that parameter. Okay. Then only we can debug a issue, or then only we can find out the bug. So I hope this is clear, right? Any doubt, guys? I think ये वाला tool MediaTek chipset है क्या? हाँ MediaTek chipset. ELT ना? Yes, ELT. ठीक है? Okay. Okay, sir. So tool wise, like जो Qualcomm है ना, ये यूज करते हैं tool QXDM, QCAT, and MediaTek यूज करती है QPST and bug raging के लिए Jira यूज करते हैं. हाँ, बग रेजिंग के लिए QPST अब नहीं है पिक्चर में ना, QPST ऑब्सोलेट हो गया. ठीक है. MediaTek ELT. QPST पहले था, जब Qualcomm मतलब QXDM वर्जन 4 तक ये QPST था, अब नहीं यूज करते QPST. ठीक है. MTK ELT है, और देन वी हैव ओपन सोर्स टूल Wireshark ना. Then Wireshark. one Jira, tool we have Jira. Logel for Ubisoft. Jira. Bug raging. Jira is bug raising tool. Okay, to raise this bug. Sir, Wireshark is the tool name. Wireshark. This one is Wireshark. Okay, this is Wireshark tool. Okay. Means MediaTek. No, MediaTek have ELT only. Okay, Wireshark is open source tool, so we can this one core logs, or this one any PCAP or eNodeB logs we can ORAN logs we can check and analyze this one on Wireshark tool. Okay. Logel and Jira. In this tool can be installed in our systems? No. This is a proprietary tool. So guys, we have some in-house projects. Okay, that's why we have this tool access. Okay, means our team is working in for some companies. Okay, so we have global projects as well as domestic projects. That's why we have tool access. This need a license version, guys. So you can't even download this tool. Okay, you need license. Okay. So Arav, so this is like ELT. Sorry to interrupt. This license tool is the Wireshark or the QSDM? Yeah. No, these two are specifically this one. Sorry. Okay. This one and Logel. Okay. Wireshark is open source, but still you need some decoder for this one. Wireshark. Okay. You can download, but log tool. Yes, Rahul. Can we use log tool here instead of Wireshark? As Which it tool? is one of log tool, LOGTOOL.
No, I'm not aware. I'm not aware with that tool. Okay. Okay. Rahul, team will show the QXDM. Yes, yes. Okay, so the guys, this Yeah. is a ELT. Okay, in the same way what I have shown you, like we can see the packets or we can see the whatever information we have in any message. Okay, this is again the same way. We have Wireshark. Oh, so maybe our team can show the QXDM as well. Okay, whatever we have. So I'm sharing the screen. Araf, you can show. Yeah. Hope guys enjoyed the technical session along with tool experience, whatever provided by Rahul. And my another team will show the QXDM tool, which will part of training. Both 2 or 3 tool will use to upgrade your skill. So this is QXDM based on Qualcomm. Okay. So team show another tool. This is QCAT. It also belongs to Qualcomm. Okay, Yeah, this is you guys can QCAT. from Okay. So now we'll go with Python automation next 10 to 15 minutes. So be available here. Take test with automation. Yeah, Hello. Sanjit. Yeah. Yeah, hello. Yeah, Hi. Rahul. Hi, Araf. Hi, Araf. Yeah, yeah. Hel- Hi. thanks, Araf, for allowing me that. Okay, guys, I hope you enjoy the session with the faculty member of Araf Solutions. So, I'm not sure how people are comfortable with Hindi or English. I'm fine with both. So, my very interesting topic I'm going to discuss with you guys, that is the Python. Let me share my screen, which make your life more easy. Okay. Let me know if everyone has seen my screen, right? Then it will be easy to share. Is visible now? Yes, sir. Okay. Now, yes. Why the objective of this particular session is for learning Python, basically. So why is Python basically? Python nothing but is a coding language where you have to do, you do to your day to life activity, for example. तो अभी Python सीखना ही क्यों है basically? Okay, let me try that. Why we Okay. want to why we want to learn the Python first of all. Okay, तो अभी Python का एक तरह का coding का language है. So there are so many points which need to be learned when you are doing in the software industry. You must have learned this, So these are the point I will go one by one. Manual testing, shifting to the automation. Suppose you are a tester, right, and you want to move to a automation because nowadays you see everything going for the automation, right? It's nothing you have to do manual. You go type like you suppose you want to calling. Suppose who are mobile testers, suppose, right? So the mobile tester, what is they have to make a call, local call, international call, STD call, ISD call. They have to do number pressing, then dial check. Oh, it's working or not. Skin touch. Like there are many way to do that. So nowadays, what happen? People moves to the automation. ChatGPT and other things, AI, machine learning comes into picture because of all these things. Your voice is not clear. Please go slow. Okay, it's fast. It's slow now. It's better. Hello. Yeah. Okay, I speak little bit fast. Okay, let me try to make it a little bit slow. Okay, so nowadays what happened? Everything like going for the automation. So whatever the manual testing is working nowadays is moving to automation. That's why Python helps us to do the coding in a automation way. So you don't need any manual effort and make it automation. So that's the one of the reason you must have to learn Python. And nowadays, when you are tester, suppose you get a logs from the UI logs, network logs, or any logs, you want to do the analysis. I will show some practical examples as of now also. So for doing the log analysis as well, suppose मैं आपको example दे रहा हूँ, one example I will give. Suppose you have UE, right? मोबाइल आपके पास, अब टावर के पास में हो, लेकिन आप जैसे दूर जाते हो एकदम बिल्कुल मोबाइल से टावर से, तो योर सिग्नल को डिग्रेडेड एंड यू सी दैट मोबाइल में कनेक्शन नहीं है, टावर चला गया, राइट? अब ये कैसे आप कर सकते हैं इसको फिगर आउट कि क्या हो गया है? जैसे आपको यूई है, सब फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल का सिग्नल चला गया समटाइम्स फ्रॉम द ई नोड भी है जो आपको टावर्स के पास, अब कैसे फाइनलाइज करो क्या हो गया? और आपको किसी ने ये लॉग्स उठा कर दे दिया यूई का कि आप सब फिगर आउट करके बताओ कि क्यों नहीं चल रहा है, क्या हो गया आखिरकार, क्यों यूई बंद हो गया, कुछ हो गया?
तो आप वो लॉग्स को निकालोगे, उसमें देख सकते हो कुछ पैरामीटर्स विच विल हेल्प यू। फॉर एग्जांपल CQI होता है जो चैनल क्वालिटी इंडिकेटर्स हो गया फॉर एग्जांपल। दूसरा हो गया RSRP का जो वैल्यू होता है पावर रेफरेंस की, कितना पावर है उसके पास, तो वो वैल्यू कहाँ पे होगा, उसमें डंप हो जाएगा यूई लॉग्स में। उसको आपको ओपन करना है और विद द हेल्प पाइथन आप उसको फिगर आउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो पर्टिकुलर पैरामीटर्स की, अच्छा RSRP का वैल्यू कम हो गया, डिग्रेड हो गया, इसी वजह से आपको नेटवर्क चला गया। एंड यू कैन टेक टोल टू द डेवलपर्स और योरसेल्फ एनालिसिस कि हाँ इसमें ये हो रहा है। तो दैट्स व्हाई log analysis nowadays doing with the help of automation। और सेकंड रीजन ये है कि जो लॉग्स होते हैं आजकल आप देखना बहुत बड़े-बड़े लॉग्स होते हैं। जो आप नेटवर्क का लॉग्स होगा ना, जो आप कभी आप खोलोगे लॉग्स कभी देखना, जो लॉग्स आपको देख के कुछ बताना होगा कि क्या चल रहा है, वो बहुत बड़े होते हैं लॉग्स। कभी-कभी 1 जीबी होता है, आधा जीबी, 500 एमबी, 100 एमबी, उसको आप लॉग उसमें खोलोगे नोटपैड प्लस प्लस में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन दैट। इट्स वेरी बिग इन साइज। You can't open and go and just search a control app. At that time, this also works. Python needs you to have to be to the help of Python. You can do that. Second thing is that in the Python you can do the complex calculation via automation. What do you mean by complex calculation? सपोज एनआर में आप काम कर रहे हो, 5G में काम कर रहे हो, तो 5G का जो कैलकुलेशन आप देखोगे ना, वो काफी बड़ा हो गया आजकल। मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ एक। अगर आप देखोगे तो जो 5G का कैलकुलेशन आजकल आ गया है, इज वेरी वेरी बिग वन। सब जैसे ये क्या है, आपका 5G का थ्रूपुट का फॉर्मूला है। ये देख के डर लगता है, सच बताऊं, कोई अगर नॉर्मल बंदा पहले देख ले, व्हाट्स इज दैट, राइट, इट लुक्स लाइक अ वेरी बिग एंड स्कैरी वन। इसको कैसे कैलकुलेट करेगा? 5G का बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो एक बता रहे थे बहुत सारे फॉर्मूले जो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो यू हैव टू डू दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ पाइथन। आप जो कोड में कर सकते हो, बस सिंपल है, इट्स नॉट ए ट्रिकी वन। इसको आप कोड में कन्वर्ट कर सकते हो एंड मेक योर लाइफ इजी। तो ये भी है विद द हेल्प ऑफ पाइथन वी कैन डू दैट। और अनदर रीजन क्या है इसको सीखने का आपको पाइथन का, एंड पाइथन इजी टू लर्न है बेसिकली। वो इंग्लिश लैंग्वेज है, सिंपल है, इजी टू लर्न है, लेकिन ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम बट इज वेरी इजी टू लर्न। और सेकंड बेनिफिट ऑफ पाइथन लैंग्वेज का ये है कि आप ये ओएस इंडिपेंडेंट, इसमें आप जो कोड करोगे ना, जो कैलकुलेशन आप सब 5G का किया है, ये सेम कोड आपका लिनक्स में चल जाएगा। मतलब लिनक्स सिस्टम में आप काम कर रहे हो, वहां भी एजीटी रन हो जाएगा। और सेम कोड आपने जो लिखा है 5G कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कोड, वो विंडोज में चल जाएगा, प्लस मेक ओएस जो एप्पल का लैपटॉप होता है, मेक ओएस उसमें भी चल जाएगा। या कोई और ओएस है, सिम्बियन है, जैसे नोकिया का, जो भी ओएस आप जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइफ में, उन सब में चल जाएगा उसका कोड। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ पाइथन कि वो कोड कहीं भी, आपको सिर्फ एक बार मेहनत करना है। लेकिन आप दूसरा लोग भी लिखो तो हो सकता है कि सी प्लस में लिखो, या सी में, तो उसका विंडोज में कोड नहीं चलता है तो लिनक्स में चलेगा, लिनक्स का कोड उसमें, तो काफी पोर्टिंग का एक झंझट होता है, काफी एक मेक योर लाइफ इजी, मतलब टफ हो जाता है। पाइथन में झंझट ही नहीं है, ठीक है। और पाइथन में आप पाइथन में कुछ भी कर सकते हो, वेब प्रोग्रामिंग कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, ऑटोमेशन, लाइक यू वांट व्हाटएवर थिंग यू कैन वांट डू द विद हेल्प पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। और एक चीज ये है जो 6 नंबर पर मुझे लगता है सबको चाहिए, जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इज वर्किंग, आई मस्ट प्रीफर, मैं सबको कहूंगा कि एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग का सीखना ही चाहिए। मैं भी देखता हूँ खासकर टेलीकॉम वाले बोलते हैं, ओ मैं तो टेलीकॉम में काम करता हूँ, व्हाई शुड आई लर्न दिस, मेरा तो काम ही नहीं है प्रोटोकॉल एक्सपर्ट। नो नो, क्योंकि आप कोडिंग, आपको एक कोडिंग लैंग्वेज, हेलो, यू मस्ट, यस यस। मैं जावा मैं सीखा हुआ हूँ, तो मुझे पाइथन सीखना पड़ेगा क्या? हाँ यस, अगर आप सीखोगे तो ऑटोमेशन करना है तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू, राइट, क्योंकि पाइथन का एक अलग ही, मैंने आपको बताया कुछ फायदा है इसका। जावा तो बैकएंड पे काम करता है, मतलब जावा अपना हाँ पता है मुझे ये जावा, या आई नो दैट, पाइथन का थोड़ा डेफिनेटली। सिंटैक्स डिफरेंट है ना? हाँ बिल्कुल सिंटेक्स डिफरेंट है, यस यस, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, नॉट थोड़ा क्या, पूरा ही डिफरेंट है उसका सिंटेक्स जावा का। लेकिन मिलता है उसका कॉन्सेप्ट, जावा उस बेस्ड है, तो वी विल डिस्कस ऑन दैट डेफिनेटली ऑन कमिंग फॉरवर्ड। बट ये इनके लिए जिसने अगर नहीं आता, फॉर एग्जांपल एक ही प्रोग्रामिंग लोग नहीं, जिसको आता है फिर भी बेटर, लेकिन पाइथन का एक अलग ही, जिसने को पॉइंट बताया, उसका अलग ही यूज है एज कम्पेयर टू जावा। जावा का यूज मोस्टली आप नहीं, देखोगे जावा का थोड़ा सिंटैक्स थोड़ा लेंदी है, पाइथन का थोड़ा सिंटैक्स ही पड़ता है। बहुत छोटा है, यस यस करेक्ट, ठीक है। तो एक पाइथन में ये तो उनके लिए है जिसके साथ आपने एक सीखा हुआ, फॉर एग्जांपल, और कोई है जो बिल्कुल नहीं आता, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू बोला, चलो आपको एक आता है अच्छी बात, ये सीखो तो ऑब्वियसली और प्लस पॉइंट ही हो, कि पाइथन का ना जो ऑब्जेक्टिव है करने का, उसका ऑब्जेक्टिव जावा का दोनों अलग है डेफिनेटली। वो मैंने इसके लिए भी मैंने एक जब हम लोग रीड करेंगे तो एक इसमें मैंने बनाया हुआ है कि कब जावा यूज होता है, कब पाइथन होता है, दोनों का ना यूज अलग अलग एक्चुअली, आपको यूज केस डिपेंड करता है कि कब जावा यूज करना है, कब पाइथन करना है, वो भी एक बहुत ट्रिकी पार्ट है। You can't use Java at one place, you can't use Python at a different place. You have to think before writing the कौन सा लैंग्वेज यूज करना है। एसक्यूएल भी पढ़ना पड़ेगा क्या? एसक्यूएल नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा आपको एज वी गो ऑन, डोंट वरी, वी विल कम टू दैट एसक्यूएल पॉइंट। एसक्यूएल तो क्वेरी के लिए हो गया, डेटाबेस है वो थोड़ा हाँ वो डेटाबेस के लिए वो डिफरेंट स्टोरी है। वी विल कम, क्योंकि अभी क्या होता है ना, जब हम लोग कुछ भी सीखते हैं तो वी हैव टू क्लियर डिफाइन कि करना क्या है, बेसिकली क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चाहिए, उसी बेसिस पे हम लोग को लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। पाइथन का अलग ही रोल है, जावा का अलग रोल है, एसक्यूएल का अलग रोल है, वो डेटाबेस के लिए बिल्कुल डेटाबेस का है। हाँ, वो अब डेटा डेटाबेस, स्टोर करता है, डेटा के लिए वो क्या क्या हाँ क्वेरी चल रहा है तो
ठीक है ना। और तीसरा है कि अगर आप कोडिंग सीखोगे तो आपका क्या ना लॉजिकल जो थिंकिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आप जो सोच रहे हो बेसिकली, आप कुछ बात भी कर रहे हो ना, तो ऐसे झट से जाकर कुछ भी नहीं बोल दोगे। व्हेन यू स्पीक समथिंग डेफिनेटली यू थिंक ट्वाइस थ्राइस फोर टाइम। इससे लॉजिकल थिंकिंग भी लोगों का इंप्रूव होता है जब आप कोडिंग करते हो, क्योंकि आप ऐसे, क्योंकि कोडिंग करने में आपको माइंड को फोकस करना पड़ता है, कंसंट्रेशन करता है। दिस आर द रीजंस व्हाई यू नीड इट टू लर्न द पाइथन। दिस आर द फर्स्ट थिंग कि ये आपको चाहिए। आप जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हो तो एक टूल चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं कि पाइथन का मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किया है। लेट्स सी हाउ कैन लाइक आई मेक सम रियल टाइम प्रोजेक्ट व्हिच विल मेक आवर लाइफ मोर इजी, जिससे हम लोग अंडरस्टैंडिंग होगा कि पाइथन काम कैसे करता है, क्योंकि ये सब मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी 1-2 एग्जांपल्स व्हिच विल मेक आवर लाइफ मोर इजी। चलिए देखते हैं। ठीक है गाइस, एनी डाउट है इसमें? पहले बताया, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया। आप लोगों ने किसी को अगर कुछ है इस बीच में, पहले आप पूछ सकते हैं। एनीवन गाइस, एनी हैव डाउट्स और एनीथिंग ओवर दिस पॉइंट? लाइक जस्ट वन गाइस टोल्ड लाइक जावा वो कर रहा है तो उसको चाहिए कि नहीं। आई डेफिनेटली से पाइथन करना चाहिए, क्योंकि इसका यूज अलग है। इट्स नॉट अबाउट इंक्रीजिंग अ प्रोडक्ट और समथिंग, क्योंकि आपका नीड अलग होगा ना। जावा का काम अलग है, वो बैकएंड में काम है, रेस्ट एपीआई लिखना होता है। इसका यूज अलग है डेफिनेटली। तो आप क्या फील्ड में कर रहे हो, तो उस ऑब्जेक्टिव से सीखना है आपको कि करना क्या है। तो पाइथन टेस्टिंग का व्यू से तो मैं 100% मैनुअल जो करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल 100% ही सीखना है। और ऑब्वियसली सबके लिए काम आता है, पढ़ाई तो कभी नुकसान नहीं होता है। तो anyone and others have any doubt, please let me know in the जो भी ज्वाइन किया है, please let me know if have any have like this guys. I think Akash, Amit, Arvind, anyone has, please let me know. Piyush, Pramod, Raghuram, Suman, Bikram, anyone, Vishnu, Wilson, any, please let me know if any have any queries on this as of now. Any have any queries, please let me know. Wilson, we have anything? Vishnu? Till now, nothing actually. Okay, so now we will go to the next. Let's see. I will show some practical example of Python with the help of Python. What can be achieved, right? Let's go one by one. I will go with one example first. Let me show you. One. This is a Python code. Okay, this is the complete Python code. Okay. This is the Python code basically. Okay, and it will help you to calculate basically NR parameters. Okay. So how we'll do, we will go one by one. And this is the code which I have written. Let me go and see how it's work. Let's run this program. And the program in Python written as normally .py extension. Okay. And this is a program which we see and we will describe on we learn, because I know it's difficult to understand to say that. When we learn, we will go step by step how it works. Let's run the program and see what's going on. Right. So what the objective of this program first? Let's see. Objective of this program writing to make our life easy by calculating the NR parameters with the help of Python. First of all, let's try run this one. So here we run this one. Okay, as we run, we can see some options are GUI options are इसमें कुछ crop पे. Let's see read one by one what's going on. 5G NR calculation लिख रहा है. तो नंबर वन ऑप्शन क्या बता रहा है कि आप 5G को अगर NR RFCNs को कैलकुलेट करना, you have to convert to 5G NR frequency. तो ARFCN जो टेलीकॉम फील्ड में होगा, I am sure they know that what is ARFCN. तो वो एक पैरामीटर्स होता है टेलीकॉम में जो कैलकुलेट किया जाता है आपको कि कहाँ पे आपका SSB होता है, ब्लॉक, वो कैलकुलेट का यूज होता है, जिसे आप निकाल सकते हो। तो ये RFCN एक पैरामीटर्स होता है टेलीकॉम में, तो आपको जिसने होगा टेलीकॉम में डेफिनेटली दो नो। तो इफ यू हैव RFCN value with you, you can get the corresponding frequency. And the information in that input should be NRFCN and output will get the NR frequency in the hertz. Number one. अगर आपको दूसरा पे जाना है तो आपको मिल सकता है कि फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी एंटर करोगे तो आपको एरप्शन निकल जाएगा। इसका इनपुट जो है आपको देना पड़ेगा एरप्शन का, सॉरी फ्रीक्वेंसी डालना पड़ेगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा ये। नंबर 3 ऑप्शन है, अगर आपने एनआर फ्रीक्वेंसी डाल दिया तो आपको मिल जाएगा बैंड लिस्ट। आपको सबको फ्रीक्वेंसी का नंबर डाल दिया, मतलब 3300 फॉर एग्जांपल, ये कौन सा बैंड में रेंज करता है। ये सब टेलीकॉम के लिए जिसने थोड़ा अगर उसको पता होगा, एनआर का जो बैंड होता है N71 N41, ये सब बैंड्स के होते हैं। ठीक है, तो ये सब अपने पास ऑप्शंस है जो हम लोग को चेक करना है। लेट्स सी, हम लोग एक ट्राई करते हैं। नंबर 1 एक ऑप्शन पहले डालते हैं कि एरप्शन से करते हैं फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग डाला यहाँ पे, तो एरप्शन का वैल्यू फॉर एग्जांपल हम 62000 डाल देता है। 1
ये डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आउटपुट निकल के आ जाएगा अपना ये. I think I have made some. Okay, you have entered the, I think, wrong parameters. Okay, invalid. I think you have entered the. Let me try again. Yes. Let me try with again the correct parameters. I think I have entered the wrong value of eruption. 1, 2, 3, 4. You see, it should be valid. It should be, I have entered the valid which is out of the range. That's why I get. You see, that's why I get this error. Now, okay. Now you see when I enter the 6 to 4 times 0, I get the frequency is 3300 megahertz. It means if you enter the value of eruption in this one, we'll get the 3300 megahertz, the corresponding frequency. Now is the option we have another one. Continue. If you want to continue that, it means you have to test more value. You have to calculate more value. Then you press yes. I press yes, and we get another options. What one we are going to do? Let's try to do the second options and figure out how it calculate. That is NR frequency to eruption करना है अपने को. नंबर 2 पे गए हम लोग और इसमें डाल रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी का एंटर करना है डेटा और आपको एरप्शन मिल जाएगा. तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी पहले मिला है 3300 फॉर एग्जांपल. तो देन वी शुड गेट 62 is the eruption. Just opposite we are doing what we did in the number 1 test. Let's enter the 3300 example. It's gone, and you see we get the 62. Right? 6,20,000 value corresponding. It means it's working perfectly fine. Right? Now we'll go to the third option, and which will give you the frequency range. Suppose on the third one, if we get the enter the frequency, we'll get the band list. Let's try the another option. Let's 3, and we will enter a frequency of 3300, and we will see in which particular band it comes. When you enter like this, you will figure out it come on the N7778. It means ये जो frequency range है आपका NR का, तो ये इस band में हो सकता है. You want to test for the other band? Anyone is there want to check any tell me any frequency in which you are working in the 5G valid frequency, and we'll check which particular band is comes. Anyone number you want to try? Please tell any number. Can you put N78? 700. Frequency, you have to enter the frequency now. So that get the 700. sorry. Frequency you can 330 megahertz is most of the It's users. already okay. We will enter. Let's try. It's 3, right? We will try with 3000 for example. Let's say 3000. Let's see in which particular band it comes. Okay, it's coming. I think it's not coming on the any band. I think that's why it's coming like this. Okay, now we'll do the some valid frequency. I have to check. We have to do some Can you go enhancement. above 330-300? Yes, 3400. Yeah, 3400 we will try, right? Let number 3, and we will put 3400 for example. Let's see. Comes again on the 78 to 78 range. Okay. Now we'll go to the next one. That is the we'll check the particular band is FDD or TD. That is the most thing people comes on the mind. Let's try it for the option 5. Okay, and option 5. Okay, sorry, I entered wrong. We have to come yes or no. So let's try and run the program again. So option 5 is let's which band we will check. Suppose we have N71, and it will give you the band which band it is TDD or FDD. Let's try. It is FDD. We want to check anyone from the panel. Please let me know which band you want to try. It is FDD or TDD. Please let me know. We will check for that. N41. N41, for example. Let's me try. The 5 number is there, right? Is the 5 N41. The TDD one? Yes, correct. Okay. Any in the similar way, these are the so many examples is there, right? So in the I have written around 12 code for 12 to convert 12 at least I think functions for implementing that. Yes, sub carrier spacing. I think that's the very nowadays a buzzword is going on. Let's try last one. 11 number that will help you to calculate 11 number. Okay. Sorry, I always press this. I have to press yes for that 11 number. What does it mean? Okay, Suppose you then. it's a numerology there, right? Concept in the 5G numerology is in the LTE is there numerology only 15 is there like 0. Now we have up to 4 like 240 kilohertz tak we can calculate 0, 1, 2, 3, 4. Let's try with the 3 or 2 for example. If numerology 2, what's the corresponding sub-carrier spacing? Let's try 2, and this for FR1. Okay,
Let's do FR. You see, as you put, it means if your nomology is 2, your corresponding frequency is 60, right? I'm not sure if anyone working on this area or not, but the formula of nomology is 2 raised to power, right? Nomology dot 15. And the simplest calculation, obviously. You see, is 16. We get it. Okay. Now, next one, last one we'll try. Then we'll go to the next topic. Now, the 12 one, calculate the number of PRB, the physical resource block, how much we require in a particular subcarrier specific channel bandwidth. Let's try number 12. Of 5G, obviously without knowing the 5G terminologies like subcarrier spacing, nomology, channel bandwidth, blah, blah things. If you don't know all these things, it's difficult to do that calculation, right? So I hope you will definitely learn. If not, definitely we will learn together. Okay, last we'll try, then we will go to the next 12 is that. What 12 will do, it will help you to calculate the number of physical block, how many you require. Okay, so what are the input is there for that? You need to input is you have to enter the first nomologies and the channel width. If you have to enter this 2, then you will get the number of PRVs. Let's I will give the nomology 1 and bandwidth. Let's I give 100. Okay. As we do that, we get the number of PRVs is 273. This is the number of blocks we require for that. So this is the way you see we can make our life more easy, right? We can do all the calculation. Now only 12. Obviously, when we are as per the requirement, we get new things. Definitely, we will add more calculation on this. And 13, 14, and 100. And I'm trying to plan to make everything calculation with the help of Python. I will just on the process to make everything automated for this calculation. Okay, so yes, definitely when we learn, definitely I will ask you to do the practical things with the help of obviously me, and you can write your own program. That's the one of the example which we learned. Now we have to stop this program and we'll go to the next examples. Okay, this is the basic parameters of the NR. Now there is a one I have written, the big one, that is the how to do the log analysis, for example, right? We will go to the next one. The log analysis we can do that. Let I have some sample logs from LTE network. Suppose these are logs we have, right? Just normal logs, dummy logs, don't go for the real meaning anything. Okay, in these logs we have seen that we have some parameter like this. Suppose we have system frame number is 27227, RSRP value. These are parameters I believe you guys are know. Not definitely is not problem. You can learn yourself. And -60 CQI 25. And again we have seen that in the next logs we have get the 79 -50 CQI. Suppose someone interested in the RSRP value only, right? And the logs is very big, right? They can't open and search everything. Let's figure out in the particular logs what is the value of RSRP in the whole logs. Okay, and we will open this logs. This open logs is the LT network logs.txt, and we'll figure out what is the corresponding value for that and how it's work. Let's open these logs. For that, I have written one simple program, LT log analysis. So we'll see the program how it's work first. Okay, let's see LT log analysis. The code for that, we open that particular file and we'll see how it's work. Okay, so let's open that. Let me open that in first Node++, so that okay here. Okay, this is the code for that. I will keep as of now, just make it comment. Okay. So guys, hope you enjoyed, and this Python automation is new for all because we are working in telecom. टेलीकॉम में जनरली काम करने वालों को ये पसंद नहीं आता है, बट नाउ इन मार्केट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बेस्ड ऑन पाइथन ऑटोमेशन बिकॉज मैनुअल इज गोइंग टू स्लो as per our study in last 2 years. Many automation engineers are required company. Yes, I agree. Definitely, I agree with you. Yes, Harav, more yeah. For more detail, the guys, those who are interested for Python automation today also schedule around 4 to 5 p.m. And I think Rahul. Yes. ये अभी Yes. इनको क्या 2 घंटा होने वाला है. किसी ने शायद खाना खाया हो, डिनर लंच लिया हो, नहीं लिया हो. जनता तो देख के समझ में आ रहा है.
Okay, then we can do again, and then we have 4 to 5 p.m. right, to Yes, cover. yes. So guys, who is interested to go with technical session? Who is going to start your career with these trainings? What about other? Akash, Amit, Arvind, ET Sales, Pradeep Yadav is recently joined. So only Vinay is interested. The rest are still wants to work in telecom. Yes. Yes, sir. Okay. And second is Raghuram. Only two hand is showing, guys. What about rest? Yeah, Vikram, you are on hold in long time. Shah Suman, Arvind Pal. Sir, can you share me your number? Number already shared in chat box. One of my team number. Sometime I will available on this number. 77099 1 minute. 35614. I'm written in 77? chat. Okay, I okay. written in chat 77099 35614. Okay, I will discuss with. Yeah. So training is scheduled by next Saturday. We'll start the batch actually, and totally training is based on practical exposure. Also, will provide 10 to 15 hour hands-on tool experience. Apart from trainer, we have separate team for tools training, resume modification, and one mentor for ease the batch. End to end, will take care about your journey. This journey will take around 4 months for 4G, 5G, and ORAN protocol testing. And if you want to get enrollment, Python automation also will take 2 months and end-to-end technical journey. And Mr. Rahul is also expert in Python automation. Now he is working in supporting from other country, and he is also a developer. Good knowledge about the technology for 2G, 3G, 4G, 5G. Now is developing the core site software development. And Python also it's add-on. If you want to give your interview, you put it in your resume. You know the Python automation. It may be help to increase your CTC. कितने Yes, I मंथ का agree. ड्यूरेशन है? 4 मंथ का? 4 month 4G 5G and 2 month for Python automation. So it's a total 6 months. You can also get connect with Python automation early, not required to wait for next 4 months. We have every 2 month new batch scheduled. Yes. Yes, one of the Python automation will batch also start by next Saturday. Okay, and for fee and all detail, you can reach to Mr. Sugand in this number. Okay. And Guys, you have any question you can ask. I am just to interrupt, available next. Yeah. just to interrupt, I Arav, am. we have I just okay. Sorry, please go ahead. yeah. I Yeah, am tell me. myself Raghuram. I'm working in Airtel as a SME. Okay. Okay. So in 5G. So my Okay. query is that my experience is 12 years near about. Means 11.6 years near about, and I'm working in Central Airtel as a Okay. subject matter expert on 5G. So if I go through this course, is it help me to get in a new domain? Yes, definitely. Definitely, yes. Yes, We and in our enrolled candidate from Ericsson Global experience around 15 years to 25 years, senior director level of candidate. Okay, and in our last batch, 3
hours experience greater than 20, and now part of Vodafone. Now one candidate joined Qualcomm as a senior program manager. Okay. Package No, actually, I 35 have lakh. worked already in five. I have already worked five company like Vodafone, Jio, Airtel, Ericsson Global, and Tata Communication. Okay. So that I have already my journey already there. But to I am interested on protocol field. So here Mhm. already we are working on the same field like our internal tool is that like called Groundhog. So we Yes, are yes. analyzing the call flow. Everything is there with us. And during for Nokia Megaplexer and for Ericsson it is DPH. We are collecting the log from the node. We are checking any issue happening. But my question is that is it okay for me to go ahead with this Yes, yes, training? definitely you can go. No issue. Because I have an internal tool also, I can see the message here. I don't have any issue on that While part also. taking here training, you also interest within your whatever tool you have. Whatever we are providing here, you also search out in your tool. Also will give opportunity to take training on QXDM, MediaTek tool, ELT. Okay. Mhm. So everything is available. So means QXTM, QCAT, I can access. Yeah, Is it? you can access. My team will give access by any desk. You Okay, can okay. ping my team and book your slot or do by on end. This is advanced facility in Arab Tech Solutions. Okay, okay. And that is I'm okay also. So let me actually have to give me on the WhatsApp group. There is a phone number, right? Yes, one number is also added in this group, and I shared in chat as well. Just a minute, let me check because I need to discuss the fees and details. Yes, yes. Okay, and just add one point Arav here, and we have Yeah, already yeah. another and 4 to 5 p.m. we have dedicated, Python. Yes, yes, yes. So you guys, if you want to, because I know you guys already exhausted completely for the last 2 hours, so you need some rest. Yes, yes, So, Rahul. we can join another in from 4 to 5 p.m. complete. I will discuss more in detail about that. You want to continue or Arav, or we can complete on the next session that 4 to 5 p.m. What do you suggest? No, we'll join 4 to 5 and we'll close in next 5 minutes. If you Okay, want next one. to, yeah. Yeah, last thing I will just Yes, complete please. that. Okay, yeah, I'm just Yeah, on yeah. the way to explain the how to analyze the logs. For example, LT logs PF. Yes, We have to yes. figure out the RSRP value. Let's run it quickly and let's see. You see, from the logs we can fetch the particular value right now. You see, for RSRP is -60, then -50 is goes to -50, -45. These are the we can fetch the from the whole logs. You see, it's a big log, right? You can just need what you want. You can make in a simple way. You make your life more easy. Right? This is the one example I can say. Last example I will say quickly. Then we will wrap up. Suppose I have a UE capability with us. Let's see. What is UE capability? Basically nothing but it will help you to show the particular UE. This is the message you seen in the QXDM basically. The QXDM is a tool from the Qualcomm which will help you to what's going on the UE side. So this is UE capability means what UE supports on your particular mobile. That's does it means what are the band is supports, what is meant for 4G supports, 5G support, or both, or blah blah things. So it is the logs from the UE side, and this is the logs we have. So now what I'm trying to run with this particular what we are trying to fetch, what are the bands this particular mobile supports. That's we have to check with the help of Python. Let's try to run it. The UE capability, you see, this is the UE capability, and we see what are the band is supported. Let's search here, and we will run the these are the band supported band list 78. These are the band. Let's run with the help of Python and we'll see what are the bands comes on that. For that, I have written code with the help of Python and make our life more easy. Suppose this is the code I have written for that. Okay. Let me run this and then we'll wrap up that. Just I will need 1 more minute. And Python nr u let make it comment as of now.
and we'll run this PNR UE capability. You see, from that logs, we can figure out what are the particular band it's supported. This particular UE. This support 78 band, 79, 3, 1, 77, 41, 71. These are the band is supported by the U. And where we get fetch this information with this big log, right? So where we open that logs, let me, I think I just close this one. This is the U capability, which is a logs we get from the QXTM. You see, right? It's 78. Suppose it's 279. You see, there's a big log, right? It's no one going to see an each to with the since it is a small logs, you can do with the searching. But if it's a big log, you can't do the searching here, right? Because loading a particular logs in a text file or notepad is very difficult. So you can with the Python, you search that U capability. It supports about 78. So similarly, we can do many things with the help of Python. On the next class, we can discuss more on this 4 to 5 p.m. session, and will help you to know more. Any have any doubts, please? I think I will wrap up then. Any have any doubts, any questions on that, please asked here. Like at least technical things in terms of that. Face use Gaurav will help you, but at least in terms of technical, you can please let me know. Any have any PJ, Binay, Raghu, it is sales, Arvind, Arab, Wilson, Vikram, Tariq Mehmet. If any have any please any queries, please let me know. Any have any queries? Wilson, you have any queries? Uh, Nothing actually, but I can see this automation really would be helpful in terms because most of the time I am working on the log analysis. In terms of if I say UE capability, that's a very big log, and it is not easy to find out any band supported or any feature supporting by the UE. Because if you going to scroll down, then it will take lots of time, and even you can't find the exact parameter. But with this help, I can say in terms of my current role, it would be really helpful with the using of Python. So Okay, so thanks. you're working somewhere already, some telecom company? Yes, I'm working, and for the Okay. particularly log analysis with the help of Python, it really would be the helpful. Okay, it help Thanks, Rahul. So this automation taking will it help up. you. Yes. Okay, that's great. One good feedback. Okay, that's great. Great to hear. Okay, anyone others have anything you want to say, or we can wrap up? Arab, over to you. Okay, thanks, Rahul. Thanks for your time. So we'll join in next 4 to 5. So guys, feel free to ask question. If you have any doubt, you can ask. Your journey will be good for next 4 to 6 months. Okay, we have lots of things to provide you guys. It will help to target I have yourself. one query actually. Yeah. What is the training timing? Training timing will be we have in morning Saturday Sunday in 8 a.m. to 10 a.m. Okay. Yeah. And for Python automation, we have a specific time, and Saturday 7 to 9 in evening, and Sunday 11 to 1 p.m. Okay. Okay. If you take add-on, it will beneficial for you guys. If you take only Python, also will this training great helpful in this journey. Okay. Any other doubt? Thanks, You Arab and can. Rahul, providing Yes. this very informative सर फिर information. डिटेल्स हमको भेजिए थोड़ा. डिटेल थोड़ा चाहिए कि पूरा चाहिए? Whatever detail you want, you can get connect with this number 7709935614. Those who are interested, put message. Team will share Okay. all the detail. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah. We are running since last 13 years. Okay. And before Corona, I was completely based on physical classes, Maharashtra, Pune. Now after Corona, totally we are shifted on online trainings. We have multiple trainings with multiple industry experts. Okay. So you can reach out our website, our LinkedIn profile, and this number.
Okay, thanks Rahul Kumar, Deepak for arranging meetings. Thanks to all for joining with us. Enjoy your Thank weekend. you. Yeah. Okay. Bye. Thank Yeah, you. sir. Thank you. Thank Bye. you, Thank you. team. Bye, bro. Thank you, sir.